Hello everyone, hope you all are good. Today we start with chapter number 13, that is magnetic effects of electric current. So before we start with the chapter, you already know about the deduction of syllabus. So I will tell you the topics which are deleted from this chapter number 13, that is magnetic effects of electric current. Topics, write down, which are deleted. Means to say that ये topics अब आपको नहीं करने हैं for the session 2020-21. That is only for CBSE students. जो चैप्टर हम करते जाएंगे बेटा उसके टॉपिक्स मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपने इस चैप्टर में ये टॉपिक्स इस सेशन के लिए नहीं करने. सो नोट डाउन फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर. इलेक्ट्रिक जनरेटर. सेकंड वन इज डायरेक्ट करंट. Direct current, that is DC. Third is alternating current. AC. Fourth one is frequency of AC. Fifth topic, advantages of AC over DC. Last topic, domestic electric circuit. Domestic electric circuit. These are the topics which are deleted from this chapter. Means to say that ये topic अब आपको नहीं करने for the session 2020-21. Note down बच्चे. Okay, fine. Now let's start with the chapter. In the previous chapter, you learn about the heating effect of electric current. So here question arises, is there any other effect of electric current? So answer is yes. That is magnetic effects of electric current. Means to say that
when current flows through wire, when current flows through wire, it produces magnetism. How can you prove? When you place a compass near a conductor, when you place a compass near a conductor and current passes through the conductor, then जो आपका compass needle है बेटा, it shows deflection. It shows deflection, which shows that करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है. जो आपका कंपस निडल है, इट बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट. जो आपका कंपस निडल है, इट बिहेव्स लाइक अ tiny magnet. Note down बच्चे. Okay. Now from here, one thing is clear. Electric current and magnetism are related with each other. Electricity and magnetism are related with each other. So reverse possibility है बच्चे कि मैग्नेट मूव करेंगे जब तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा. मीन्स टू से दैट मूविंग मैग्नेट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट. रिवर्स पॉसिबिलिटी में इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ऑफ मूविंग मैग्नेट्स. नोट डाउन बच्चे. Okay. So in this chapter we discuss about the electromagnetism. Electromagnetism, electric motor, which involve the magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current. On the other hand, electric generator which involve the electric effect of moving magnets, which involve the electric effect of
moving magnets। सीबीएसई स्टूडेंट्स को ये टॉपिक नहीं करना है। For other boards, ESEB, I will discuss these topics one by one. Note down बच्चे। Okay. So beta, Hans Christian arrested, leading scientist. Name of the scientist is Hans Christian arrested. That is a leading scientist of 19th century, played an important role in electromagnetism. He accidentally observed that when compass needle is placed near a conductor, it produces magnetic effect. I already tell you, compass needle when placed near a conductor, and current passes through it, it shows deflection. Deflection means to say that वो needle अपनी place से थोड़ा सा move कर जाएगी, little bit. So this shows that magnetic effect of electric current. So from here you observe that electricity and magnetism are related with each other. And in the honor of this scientist, unit of magnetic field strength. Write down unit of magnetic field strength is our stick. Right on the check. Okay, fine. So this is the introduction of this chapter, bache. Now, first topic that we start, magnet. What is magnet? What is
मैग्नेट। मैग्नेट क्या है बच्चे? हिंदी में आप उसको बोलते हैं चुंबक। सो एन ऑब्जेक्ट विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ, आंसर इज एन ऑब्जेक्ट which shows the properties of first attracting small pieces of iron, attracting small pieces of iron. Second property is when you suspend it freely, when you suspended it freely with the help of thread, it always rests in north-south direction. North-south direction means to say that मैग्नेट है क्या? वो ऑब्जेक्ट जो आयरन पीसीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सेकंड, जब उसको आप एक थ्रेड की हेल्प से फ्रीली हैंग कर दोगे तो वो जब रेस्ट पे आएगा तो ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नोट डाउन बच्चे। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चे मैग्नेटिज्म। राइट डाउन। मैग्नेटिज्म, द प्रॉपर्टी by virtue of which a magnet attract small pieces of iron, and rest in north-south direction, when suspended freely, is called magnetism. Note down बच्चों। ओके, नेक्स्ट वन बच्चे, मैग्नेट्स यूज कहां होती हैं? मैग्नेट्स आर यूज्ड इन, राइट डाउन, मैग्नेट्स आर
used in radio, stereo speakers, doors, फ्रिज डोर भी होता है बच्चे आपका, वहां भी मैग्नेट यूज होता है, एंड फ्लॉपीज या डिस्क्स. नेक्स्ट इज एमआरआई. एमआरआई क्या है बच्चे? दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. मैग्नेटिक resonance imaging. That is used to scan inner human body parts. That is used to scan inner human body parts. Human body. Note down बच्चे. Okay. नेक्स्ट बेटा, जब आप मैग्नेट को सस्पेंड करते हो फ्री, इट ऑलवेज इन रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. आई ऑलरेडी टेल यू, व्हेन मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, suspended freely, it always rests in north-south direction. It always rests in north-south direction. Now beta, the pole which point towards north, the pole which point towards north, is called north seeking pole. North seeking pole, or simply north pole, or simply north pole. Same बच्चे, the pole which point towards south, the pole which point towards south, which point towards south is called south seeking pole. South seeking pole, or simply south pole. Note down बच्चे.
Okay. Now बच्चे magnet we use in practical labs, that is a bar magnet that have two poles, north and south. So a magnet have two poles. A magnet have two poles. One is north, second is south. Like poles बच्चे, like means to say that same. Same poles repel each other. Repel each other. That is north north, साउथ साउथ. ये एक दूसरे से क्या होंगे बच्चे, एक दूसरे से दूर जाएंगे. सेकंड इज अनलाइक पोल्स. अनलाइक मीन्स टू से दैट different poles attract each other. Attract each other means to say that different poles एक दूसरे के पास आएंगे. That one is your north or south or north. Note down बच्चे. That is same like the electric charges. Charges में क्या था? Same charges repel each other and different charges attract each other. Here just poles आ गया charge की जगह due to the magnet. Write down the chain. Also write down the name of the magnet, that is bar magnet. Bar magnet. Basically we use it in the practical labs, science practical labs. Note down which. Okay. Next topic, that is magnetic field. Magnetic field. Magnetic field क्या है बेटा? That is a space up to which the force of magnet can be experienced. So simple definition for magnetic field, write down the space up to which the force of magnet can be experienced is called magnetic field. Is called magnetic field. Note down मुझे. Next is magnetic field lines. Write down magnetic field lines.
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चे सिंपल डेफिनेशन आप क्या दे सकते हो, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज a magnetic field line is a continuous curve, is a continuous curve. In a magnetic field, in a magnetic field such that tangent at any point on it, such that tangent at any point on it gives the direction of magnetic field at that point, gives the direction of magnetic field at that point. You just find out the meaning of tangent. You can comment me the meaning of tangent. Write down बच्चे. Otherwise, I will tell you the meaning of tangent in the next lecture. Note down. Okay. If you want a more clarification about magnetic field lines, how can we draw and how can we observe the pattern of magnetic field lines? You can see the activities that are made by my student Divanshu from DAV Public School Patiala and Hemant Jindal. हेमंत ने ये एक्टिविटी आयरन पार्टिकल्स के साथ की है और जो दिवांशु ने की है दैट इज विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास. सो यू कैन परफॉर्म both the activities for magnetic field lines. You just go through the activity or watch my channel and see the activity. You will understand about the magnetic field pattern or magnetic field lines. Note down the channel. Okay. So you can perform also these activities if you have material available. So next topic, that is properties of magnetic field lines. Note down properties of magnetic field lines. Magnetic field lines. You just go through this topic or read the topic from NCERT book. In the next lecture, we discuss about these properties or properties of magnetic field lines. Pattern आप देख सकते हो बच्चे कैसे draw करना है in the activities that are already on my channel Prosperous Academy. And if you like my lecture, then please support me and please subscribe, like and share Prosperous Academy. That is the name of my YouTube channel. Thank you and have a nice day.
Kintal, student of class 10th, under the guidance of Prosperous Academy, Chief Mentor R. K. Sharma. I will show you different activities with the help of bar magnet, compass and circuit board. First, I will show you magnetic effect of electric current. Material used in this activity: circuit board, battery and compass. Let's start with the activity. Connect the battery with the positive and negative terminal. A compass is placed under the wire. When no current is flowing in the wire, a compass needle points in usually north-south direction. Let us pass the current by pressing the switch. On passing the current, we find that compass needle is deflected from its north-south direction. When switch is off, compass needle returns to its original position. I will show you 2 or 3 times. This shows that an electric current produces magnetic field. Second, I will show you same or like poles repel each other. And I will show you unlike or different poles attract each other. Third, I will show you magnet always rests in north-south direction when suspended freely with the help of thread.
it rests in north-south direction. Hello everyone, hope you all are good. Today we start with the topic properties of magnetic field lines. Write down properties of magnetic field lines. So you are familiar with the magnetic field lines that are drawn with the help of bar magnet and compass. That is drawn with the help of bar magnet, that is north and south, and with the help of compass, magnetic compass, or that is called floating compass. जो कंपास आप साइंस लैब में यूज करते हो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास. और सिंपली उसको क्या बोल सकते हो बेटा, फ्लोटिंग कंपास. और नॉर्मली हम वर्ड ये भी यूज कर लेते हैं ओनली कंपास. So with the help of bar magnet and compass you draw the magnetic field that is just look like in this shape. That is arrow is from north to south. Here just draw the compass that shows the arrow. Again here north to south. That is from here. That is compass net. So magnetic field pattern in the bar magnet is look like this one. You already observe my activities that are made by my students Divanshu and Hemant. So here we start with the first point. Now first point is bache, that is they travel from north to south. They travel from north to south outside the magnet. They travel from, write down, north to south outside the magnet. And south to north inside the magnet. Second point is
they are closed continuous curve. They are closed continuous curve. You observe in the figure. That is, they are closed and continuous curve. Right on, बच्चे? Third point, the number of magnetic field lines. The number of magnetic field lines, write down, per unit area. Per unit area determines the strength of magnetic field. Determines the strength of magnetic field. इस पॉइंट का मीनिंग क्या है बेटा? व्हेन यू ऑब्जर्व द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, यू जस्ट ऑब्जर्व द field pattern with the help of iron particles or iron filings in the activity. You just see that near the poles maximum iron particles are attracted. Means to say that poles के नजदीक क्या है? Maximum iron particles है. So field lines क्या है? Poles के पास maximum है. So poles के पास आपकी magnetic field strength क्या है? ज़्यादा है. That is more. So near the poles magnetic field strength is more, and as we move away from the poles, magnetic field pattern becomes far away from each other, or magnetic field strength is reduced. So away from the poles, magnetic field strength is less. Magnetic field strength is less. Note down बच्चे. Third 3 point note कर लो. Then we carry on the fourth point. Okay. Fourth point is बेटा, थर्ड पॉइंट को मॉडिफाई करके बेटा फोर्थ पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are closer near the poles.
So strength of magnetic field is strength of magnetic field is maximum. Is maximum near the poles, and as we move away from the poles, as we move away from the poles, the magnetic field lines are wider. Wider means to say that बेटा जैसे जैसे हम पोल से दूर होते गए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में स्पेस क्या होता गया, इंक्रीज होता गया. दे बिकम्स वाइडर. दिस शोज दैट magnetic field is weak. Magnetic field strength is weak or less as we move away from the poles. From the poles. Right on, बच्चे. Okay. फिफ्थ पॉइंट है बेटा आपका the direction of magnetic field line. The direction of magnetic field line. The direction of magnetic field line at any point is along the tangent on the field line. Tangent on the field line at that point. In my last lecture, I just asked you the meaning of tangent. So here I explain the meaning of tangent. If here is a magnetic field lines, I suppose, then direction of magnetic field is along the tangent at that point. टेंजेंट मीन्स टू से दैट जिस पॉइंट पे और जिस सिंगल पॉइंट पे वो उस कर्व को टच करेगा, दैट इज टेंजेंट. नोट डाउन बच्चों.
यहाँ मेंशन कर लो आप लोग, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नोट डाउन। ओके, last point is that is 6th point. Two magnetic field lines never intersect with each other, never intersect with each other. इस बेस पे बेटा आपका एक क्वेश्चन भी है, दैट इज क्वेश्चन इज why do magnetic field lines never intersect with each other, never intersect with each other. So answer is, that is 6th point. ये बेटा आपका आंसर है। Two magnetic field lines never intersect with each other because if they intersect, then at the point of intersection, there would be two direction of magnetic field lines. If they intersect, then at the point of intersection पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा कौन सा है, जहां पे दो लाइंस क्या कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, कट कर रही हैं। Then at the point of intersection there would be two direction of magnetic field. There would be two direction of magnetic field. Means to say that needle show two direction for the same magnetic field, for the same or single magnetic field. So which is not possible, which is not possible. So that is the required answer, why two magnetic field lines never intersect with each other. Note down बेटा, ये आपका क्वेश्चन भी है और that is very very important. Just note down and learn. Note down बेटा.
That is all about the properties of magnetic field lines. ना बच्चे, अब तक आपको पता चल गया होगा कि आप मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसे ड्रॉ कर सकते हो. यू कैन ड्रॉ magnetic field pattern in two ways. By compass or bar magnet, Second is by using iron filings, that is iron particles. You just see in the activity, or bar magnet. Note down beta. Hello everyone, hope you all are good. In my last lecture, I just tell you about the properties of magnetic field lines and how can you draw magnetic field pattern with the help of bar magnet and compass, or in place of compass you can also use iron particles. Today we start with the topic compass. Write down. Compass. So what is compass? A compass or floating compass. A compass or floating compass consists of a tiny pivoted magnet. Write down. Usually in the form of a pointer. Which can turn freely in the horizontal plane. The tiny pivoted magnet. That one is your magnetic needle or just needle. The tiny pivoted magnet is called magnetic needle or just needle. So here, if we draw this one, so this pointer, this arrow shows the
north one or north side, and pointer or tail that shows south. And this one is tiny pivoted magnet. Tiny pivoted magnet are called magnetic needle. Magnetic needle. Or in generally, you know that compass is used for find out the directions. Note down beta. यहाँ आप मेंशन कर सकते हो that is tip of the compass. Tip of compass shows north and tail of compass shows south. This topic is just for your knowledge. Note down beta. Okay, fine. Next topic, note down magnetic field of Earth. Magnetic field of Earth. Now बच्चे जो अर्थ है that also behaves like a magnet. Earth also behaves like a magnet. अब बच्चे इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है मीन्स टू से दैट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा है द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द पैटर्न ऑफ magnetic field is same that is look like in case of bar magnet. Means to say that Earth का magnetic field pattern it just look like this one. Note down बच्चे.
Next, the axis of Earth magnetic field. Earth magnetic field is inclined at an angle of 15 degree with geographical axis. With geographical axis. अब बच्चे जो मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ में मैग्नेटिक इफेक्ट है वो किस वजह से है? राइट डाउन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड is due to the magnetic effect of current. Is due to the magnetic effect of current. Which is flowing in the liquid core at the center of Earth. Which is flowing in the liquid core at the center of Earth. So this is all about the magnetic field of Earth. Note down बच्चे. Okay. Next topic is uniform and non-uniform magnetic field. Uniform and non-uniform magnetic field. Now बच्चे, first one is uniform, second is non-uniform. First we define uniform magnetic field. If magnetic field lines are parallel and equidistant,
and equidistant, then magnetic field is called uniform. Then magnetic field is called uniform. So many students have doubt about the parallel. What is parallel lines? सिंपल वर्ड्स में पैरेलल लाइंस क्या है बेटा? Which never intersect, which never intersect or which never meet, which never meet, that is this. And equidistant, that is equidistance, means to say that at equal distance. So you can draw uniform magnetic field in this, just like draw this one is your uniform magnetic field. Note down beta. Okay. Next one is non-uniform, just opposite to uniform. If magnetic field lines are not parallel, if magnetic field lines are not parallel, and are not equidistant. Equidistant means to say that at equal distance. At equal distance. Then magnetic field is called magnetic field is called non-uniform. Note down बच्चे. Or in simple words, you can write down if magnetic field lines are unequally spaced. If magnetic field lines are unequally spaced, then magnetic field is said to be uniform. Non-uniform, then magnetic field is said to be non-uniform. Note down बच्चे.
Next topic is magnetic effect of current or electromagnetism. Magnetic effect of current or electromagnetism. Right on बच्चे, the magnetic effect of current. The magnetic effect of current was discovered by Orested in 1820. Orested in 1820. In this case, बच्चे, when electric current is passed through a conductor, a magnetic field is set up. When electric current is passed through a conductor, a magnetic field is set up around it. A magnetic field is set up around it, which exists so long as the current flows in the circuit. As the current flows in the circuit. Means to say that जब तक करंट फ्लो करता रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड है. When we switch off the current, magnetic field disappears. So that's why this one is the temporary magnetism. जब तक आपका करंट फ्लो कर रहा है तब तक तो मैग्नेटिक फील्ड है. When you switch off, magnetic field disappears. So this one is the temporary magnetism. Electromagnetism is temporary. Means to say that not permanent magnetism. Note down बच्चे. Okay. Now बच्चे, how can you show magnetic effect of current? That is, experiment to prove magnetic effect of current. That is, in that case,
a wire AB connected with the key or battery. That one is positive, negative. A compass is placed near the wire AB. When no current flows in the circuit, no current flows in the circuit, the needle is parallel to wire AB. The needle is parallel to wire AB. Now in second case, key is closed. That is this one. Positive, negative. Now बच्चे करंट फ्लो स्टार्ट हो गया. That is this one. So compass needle just show the deflection. Compass needle अपनी पोजीशन से क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी. This one is the deflection. So this one is the experiment to show magnetic effect of current. Draw the diagram beta. In that case, you can write down when current flows, needle shows deflection. Needle shows deflection. Deflection means to say that वो अपनी पोजीशन से little bit move कर जाए. Draw the diagram. Now in that case, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ बेटा, उसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स ऑन द करंट. राइट डाउन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड increases with the increase of current. Increases with the increase of current means to say that strength of magnetic field
strength of magnetic field is directly proportional to the current. Means to say that करंट की अमाउंट अगर इंक्रीज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, करंट की अमाउंट अगर डिक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी. दैट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. नोट डाउन बच्चे. And if you want more clarification about this experiment, then you can just watch the activity made by my student Hemant Jindal. That is on my channel Prosperous Academy. Note down, Bujji. Okay. Next topic is magnetic field pattern produced by current carrying conductors. Magnetic field pattern produced by current carrying conductors having different shapes. So this topic we discuss in our next lecture, and if you like my lecture, then please subscribe, like and share my YouTube channel Prosperous Academy. Thank you and have a nice day. Hello everyone, hope you all are good. Today we start with the topic magnetic field patterns. Write down magnetic field patterns produced by current carrying conductors. Current carrying conductors having different shapes. So beta, you are well known about the magnetic field pattern that is drawn with the help of bar magnet and compass. You know also the shape of that magnetic field pattern. Now here we use current carrying conductors.
current carrying conductors having different shapes. Means to say that करंट कैरिंग कंडक्टर्स जिनका शेप क्या होगा, अलग अलग होगा, उनका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न भी क्या होता है, उनकी शेप भी क्या होती है, डिफरेंट होती है. सो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट शेप्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल we will study the magnetic field patterns by, write down, we will study magnetic field pattern due to, first है straight current carrying conductor, straight current carrying conductor or straight wire, both are same, straight wire. Second one is a circular loop or circular wire. A circular loop or circular wire. Note down बच्चे. And last one is third, a solenoid, that is a long coil of wire. Third one is solenoid, a long coil of wire. Carrying current. Note down बेटा. Okay, so we will discuss all these one by one. Write down first one, that is magnetic field pattern due to straight current carrying conductor. Magnetic field pattern due to straight current carrying conductor or here you can write it as straight wire. First of all, draw the diagram. Now here a wire AB and fixed cardboard sheet is fixed here.
and that is connected with the battery, and second is here, just put a key. That one is your positive, that one is your negative. जो आपका वायर का सेंटर है बेटा, you just take it in center. That is this one. So here magnetic field pattern is in the shape of, that is the direction of current. This one is the direction here. That is a wire AB. Just name it A, B. So magnetic field pattern is in the shape of concentric circle. So you can write down magnetic field pattern due to current carrying conductor. Mention the word straight. Due to straight current carrying conductor. Or straight wire are in the shape of concentric circle. Concentric circles, बच्चे, what is concentric circles? Having the same center. Circles having the same center. So write down in brackets, circles having the same center. Means to say that जिनका सेंटर क्या होगा, सेम होगा. आप नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर दो, बट उनका सर्कल्स का सेंटर क्या होगा, सभी का 1 होगा, एक ही सेंटर. आर इन द शेप ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आपको शेप का तो पता चल गया, दैट इज स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आपका बनेगा वो किस फॉर्म में आएगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में. राइट ऑन बेटा. Now here I little bit explain the diagram. AB is a wire or straight wire. AB क्या है आपका, straight wire or straight current carrying conductor that passes through a cardboard sheet given the name C. C is cardboard sheet. Yeah, only write down cardboard. Connected with a battery or a switch. Both are connected or wire is connected
with a cardboard or switch. Now when current is passed through wire, here iron filings arrange themselves in the form of circles. I repeat, when current is passed, here iron filings arrange themselves in the form of concentric circles. Right on, बच्चे. Okay. Now here बेटा जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न का डायरेक्शन, that depends on the direction of current. When current is upward, direction of magnetic field lines are in anti-clockwise. Write down. When current is upward, direction of magnetic field lines are in anti-clockwise. And when you reverse the direction of current, means to say that downward, then direction of magnetic field lines are also get reversed. Write down, when current is downward. When current is downward, direction of magnetic field lines are in clockwise. Here two words are important. One is anti-clockwise and other one is clockwise. Current is upward, then direction is anti-clockwise, and current is downward, then direction is clockwise. Right on, Bachi. Okay. Next, it is shown by the experiments that magnetic field produced in straight current carrying conductor that depends on or directly proportional to the current. Write down, strength of magnetic field. Strength of magnetic field produced in straight current carrying conductor.
is, first one is directly proportional to the current. Directly proportional to current. Second point is inversely proportional to the inversely proportional to the inversely proportional to the distance of that point from the wire. Distance of that point from the wire. नाउ मीनिंग क्या है बेटा, करंट की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, इंक्रीज, और जैसे जैसे करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी. मीन्स टू से दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इनवर्स मीन्स टू से दैट उल्टा. दैट वन इज जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी. मीन्स टू से डिस्टेंस बढ़ रहा है तो स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और डिस्टेंस कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. राइट डाउन लॉजिक. Okay. Now next bit of direction of magnetic field in straight current carrying conductor is found by the rule that is right hand thumb rule. Write down direction of magnetic field associated with straight current carrying conductor. Straight current carrying conductor is given by a right hand thumb rule. Right hand thumb rule. ना बेटा आपका राइट हैंड थंब रूल क्या है, to discuss here. First of all, if you hold straight current carrying conductor in your right hand and thumb gives the direction of current, thumb gives the direction of current here, just see, then the curved fingers gives the direction of magnetic field. I repeat, when you hold straight current carrying conductor in your right hand, then the thumb gives the direction of current and curved fingers gives the direction of magnetic field. Just note down, when you hold straight current carrying conductor, straight current carrying conductor in your right hand, in your right hand, then
thumb gives the direction of current, or if current is in the direction of thumb, then the thumb gives the direction of current, and curved fingers gives the direction of magnetic field. Just see again. When you hold straight current carrying conductor in your right hand, then the thumb gives the direction of current and curved fingers gives the direction of magnetic field. Note down बच्चे. Last point बच्चे. Right hand thumb rule is also known as, just note down, a right hand thumb rule is also known as Maxwell corkscrew rule. Maxwell corkscrew rule. Note down बच्चे. Okay. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप. मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ circular loop. Now बच्चे, we have so far observed the magnetic field pattern due to straight current carrying conductor. Now here just
straight wire is bent in the form of circular loop. Straight wire just bent in the form of circular loop. That is this one, circular loop. Here current is first of all, here draw some circles or concentric circles. Now that is, so straight current carrying conductor के केस में आप magnetic field pattern observe कर चुके, that is concentric circle. Now in the case of circular loop, बच्चे आपको पता है कि जो आपका magnetic field pattern produce होता है, that is depends inversely on the distance from the wire. So जैसे जैसे distance बढ़ता गया, concentric circles जो थे उनकी शेप क्या होती गई, बिग होती गई और वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में चेंज हो गई. दैट वन इज शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन केस ऑफ सर्कुलर लूप. Write down magnetic field produced by a magnetic field produced by current carrying straight wires, current carrying straight wire depends inversely on the distance from it, depends inversely on the distance from it. Similarly, write down बच्चे, at every point of current carrying circular loop. Similarly, at every point of current carrying circular loop, concentric circles becomes larger and larger as we move away from the wire. Becomes larger and larger as we move away from the wire. Just note down with it.
Okay. By the time, note down बच्चे, we reach at the center of circular loop. By the time we reach at the center of circular loop, at the center of circular loop, the concentric circles appear as a straight lines. The concentric circles appear as a straight lines. Note down बच्चे. Okay. ना बच्चे इस केस में जो स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस हुआ वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड produced in circular loop depends on or directly proportional to the first factor क्या है बेटा, current. Second one is number of turns. Note down. And that one is directly proportional. Here क्या है बच्चे आपका directly proportional. Strength of magnetic field here directly proportional. And inversely proportional to the radius. Now you will understand the meaning of directly proportional and inversely proportional. Just note down the G. So if you want to increase the strength of magnetic field, then you have to increase the amount of current or increase the number of turns. Magnetic field in this case, number of turns के केस में क्या होता जाएगा, add up होता जाएगा. Or if you want to decrease the strength of magnetic field, then you have to decrease the radius of that part. Note down the G. Okay.
Third one is बच्चे magnetic field pattern due to a solenoid. Write down magnetic field pattern due to a solenoid. First of all बच्चे यहाँ word है solenoid. So what is solenoid? First I mention the question, what is solenoid? So simple answer is बच्चे, write down question, write down बच्चे. Solenoid is a coil of many turns. Coil of many turns of wire wrapped in the shape of cylinder. Wrapped in the shape of cylinder. And magnetic field pattern कैसा प्रोड्यूस होता है बेटा? इन द केस ऑफ सोलेनॉइड दैट इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट. सो हियर just draw the diagram. Just mention here. Now magnetic field pattern बच्चे, that is this one. This one that is similar to the bar magnet. You draw two or more lines. Write down magnetic field pattern magnetic field pattern produced in case of solenoid is similar to that of bar magnet. And you are well known about the pattern that is produced in the case of bar magnet. Just note down बच्चे.
नाउ इन दिस केस बच्चे जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट नोट डाउन, स्ट्रेंथ ऑफ magnetic field produced in case of solenoid depends on, फर्स्ट फैक्टर है आपका करंट। इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इफ यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट, if value of current is increased, strength of magnetic field is also increased, is also increased. On the other hand, if value of current is decreased, then strength of magnetic field is also decreased. Also decrease. In simple words, you can say that strength of magnetic field is directly proportional to the current, or you can write strength of magnetic field is directly proportional to current. Just note down the change. Okay. Second, it depends on the number of turns. It depends on the number of turns. So if number of turns is supposed to be n, then strength of magnetic field is also n times. Means to say that जैसे जैसे numbers of turns increase करते जाएंगे, इस केस में बच्चे करंट क्या होता जाएगा? एड अप होता जाएगा वन बाय वन, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी. सो हियर अगेन दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to number of turns. Note down. Third, it depends on nature of the core material. Nature of the core material. Means to say that बच्चे यहां पे अगर आप मटेरियल आयरन यूज कर रहे हो तो इट प्रोड्यूसेस मोर मैग्नेटिक फील्ड. दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कोर मटेरियल. इस मेथड को डिफरेंट सब्सटेंसेस जैसे आयरन है उसको मैग्नेटाइज करने के लिए भी यूज किया जाता है. मीन्स टू से दैट व्हेन यू पास द करंट द आयरन गेट्स मैग्नेटाइज्ड और दैट बिकम्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. नोट डाउन बच्चे.
So here nature of the core material, just write down the example. In case of iron, it produces strong magnetic field. It produces strong magnetic field. Note down it. Okay. Now we have so far discussed about the magnetic field patterns produced by different shapes of conductors. Now in the last we discussed about the solenoid, and it is used to make an electromagnet. Electromagnet, write down. So our next topic is electromagnet. Electromagnet. I just give you the intro that is made from two words, electro plus magnet. You just think about that and go through the topic. We will discuss it in the next lecture. And if you like my lecture, then please support me and subscribe, like and share my YouTube channel, Prosperous Academy. Thank you and have a nice day. Hello everyone, hope you all are good. In my last lecture we discussed about the solenoid. Today we discuss the topic electromagnet. Write down electromagnet. First of all, बच्चे, it is clear from the word. It is made up of two words. One is electro and second one is magnet. Electro refers to the electrons or charge. Electrons or charge means to say that when electric current is passed through the conductor, it behaves like a magnet, and that one is called electromagnet. In simple words, this one is the definition. When you pass the current, it behaves like a magnet. That magnet is called electromagnet. Write down बच्चे. Simple definition है आपका. Write down. Electromagnet is simply a bar of soft iron. It is a bar of soft iron placed inside a solenoid carrying current. Placed inside a solenoid
carrying current. Right done, बच्चे. Now here, this one is carrying current. You well known about the term solenoid. When you pass the current, or you can write down, when you pass the current, the bar of soft iron, the bar of soft iron placed inside a solenoid behaves like a magnet. Behaves like a magnet. On the other hand, when you switch off the current, when you switch off the current, magnetism disappears. Magnetism disappears. Means to say that जब तक करंट पास होता है तब तक तो वो बिहेव लाइक अ मैग्नेट है और बिहेव करेगा एज अ मैग्नेट. बट जब करंट की सप्लाई ऑफ हो गई, मीन्स टू से दैट स्विच ऑफ कर दिया, देन इट इज नो मोर मैग्नेट. सो इट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट. फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इज अ temporary magnet. In other words, you can write down not permanent. Magnet. Note down the tip. Okay. Now electromagnet is used in electric bells, telephones and electric motors. Write down, it is used in electric bells, motors and telephones. Note down बच्चे. Okay. Next one is difference between the bar magnet and electromagnet. Difference between bar magnet and electromagnet.
So you are well known about the terms bar magnet as well as electromagnet. So here is the difference. Just draw a straight line. Here bar magnet, and this one is electromagnet. Electromagnet. Note down the thing. First point, it is a temporary magnet. It is a permanent magnet. It is a permanent magnet. Means to say that इसमें आपका मैग्नेटिज्म डिसअपियर नहीं होता. On the other hand, this one is a temporary magnet. It is a temporary magnet. Note down बच्चे. It produces bar magnet. It produces weak forces of attraction. Weak forces of attraction. On the other hand, here just opposite, it produces strong magnetic field or magnetic force. It produces strong magnetic force. Third point is strength of permanent magnet. Or bar magnet cannot be changed. Cannot be changed. But here, in case of electromagnet, that one is a temporary. Strength of electromagnet can be changed. Strength of electromagnet can be changed. And how? ये कैसे चेंज हो सकता है? By increasing or decreasing the amount of current. करंट की वैल्यू आप इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो. नंबर ऑफ टर्न्स, ये फैक्टर मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं. नंबर ऑफ turns, and this one is also depend on the nature of material. You are well known about these factors. Note down बच्चे. Last point is the polarity or north-south polarity. North-south polarity of bar magnet cannot be changed. Cannot be changed. And in case of electromagnet, the north-south polarity, the north-south polarity changes or can change
by changing the direction of current. Can change by changing the direction of current. Direction of current. Now last point का मीनिंग क्या है बेटा? इस केस में पोलैरिटी वर्ड है. Polarity related to the north south pole. Polarity word is related with the poles. इस केस में नॉर्थ साउथ पोल चेंज नहीं कर सकते, बट इन दिस केस इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में आप नॉर्थ साउथ पोल को चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. नोट डाउन बच्चे. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे आपका फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. फोर्स force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. Now force on a current carrying conductor कहां पे रखा है बेटा? दैट इज इन द मैग्नेटिक फील्ड. नोट डाउन. Now when current carrying conductor placed in a magnetic field, it experiences a force. करंट कैरिंग कंडक्टर जब आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. And if the direction of the field and current, direction of field and current, direction of field and current are perpendicular. This one is a symbol of perpendicular. You can write down the word also, perpendicular. Now बच्चे क्या है? Direction of field and current both are perpendicular to each other. Then force क्या हो जाएगी आपकी? Write down.
force acting on the conductor, then force acting on the conductor will be perpendicular to both. Means to say that फील्ड एंड करंट अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हैं तो जो फोर्स अप्लाई होगा दैट वन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ दिस फील्ड एंड करंट and is given by Fleming's left hand rule. And this is the basis of electric motor. This is the basis of electric motor. Means to say that इलेक्ट्रिक मोटर आपका इस बेस पे काम करता है. नोट डाउन बच्चे. Okay. एंड इलेक्ट्रिक मोटर है क्या बेटा आपका? दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिक मोटर is a device that converts electric energy into mechanical energy. Note down बच्चे. Okay. Next topic is direction of force on a current carrying conductor. Direction of force on a current carrying conductor. Or Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. In this case बच्चे, if you stretch your fingers of your left hand, फिंगर्स आपकी कौन कौन सी हैं? दैट वन इज मिडल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब.
if you stretch these three fingers, just look at this, then फिंगर आपकी कौन कौन सी हैं? If you stretch forefinger, middle finger and thumb of your left hand mutually perpendicular to each other. Just look at my hand. These are the three fingers which are mutually perpendicular or stretch perpendicular to each other. Write down, if forefinger middle finger and thumb of your left hand are stretched perpendicular to each other, are stretched perpendicular to each other, then forefinger आपका बच्चे gives the direction of magnetic field, and if forefingers points towards the direction of magnetic field, point towards the direction of magnetic field, and middle finger that is points along the direction of current. Middle finger points along the direction of current. Direction of current. Then thumb. Then thumb. Thumb क्या करेगा? Then thumb, write down, will indicate the direction of force acting on the conductor. Then thumb gives the direction of force, gives the direction of force acting on the conductor. Note down बच्चे. Here I just specify you. These are the three fingers. This one is your middle, this one is your forefinger, and this one is your thumb. Forefinger or middle finger. Middle finger gives the direction of current, forefinger gives the direction of field, and thumb gives the direction of force acting on the conductor. Note down better. Okay, fine. नेक्स्ट टॉपिक बेटा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, बट उससे पहले रूल्स आपके कहां कहां अप्लाई हो रहे हैं
इसमें बच्चों को कंफ्यूजन है। जब आपने करंट कैरिंग कंडक्टर आपका और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, when you hold straight current carrying conductor in your right hand, in your right hand, यहां पे आप कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हो? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। सेकेंड, नोट डाउन, जब आपका करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field, placed in a magnetic field, यहां पे आप कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हो? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एंड जब आपको बच्चे डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जब आपको क्या फाइंड आउट करना है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ विच करंट? इंड्यूस्ड करंट। देन आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये बेटा आपका था कि कौन सा रूल कहां पे आपको अप्लाई करना है। जस्ट नोट डाउन, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जब आपने राइट हैंड में होल्ड किया हुआ है, देन आप रूल कौन सा अप्लाई कर रहे हो? राइट हैंड थंब रूल। जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, देन यू अप्लाई द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और जब आपको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, देन यू अप्लाई द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड rule. We discuss it in the next lecture, but here a term is used, that one is induced current. So question is that what is induced current? What is induced current? You can answer me with your comments, or you can also direct WhatsApp me on my number. We discuss it in the next lecture. You just go through this topic, and if you like my lecture, then please support me and subscribe, like and share
my YouTube channel Prosperous Academy. Thank you and have a nice day. Hello everyone, hope you all are good. Today we start with the topic determination of direction of induced current. Write on the topic determination of direction of induced current. Induced current. First of all, बच्चे, in my last lecture, I asked you a question: what is induced current? Today we discuss first all these terms. So before we start with the topic, we discuss these terms. First है electromagnetic induction. Electromagnetic induction. Now बच्चे electromagnetic induction आपका क्या है? The production of electricity from magnetism. The production of electricity from magnetism is called electromagnetic induction. नाउ आप क्या कर रहे हो बेटा? मैग्नेटिज्म की वजह से और बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिज्म प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Because of the magnetism, there is a production of electricity. That term is electromagnetic induction. Note down बच्चे. इसमें बेटा आपका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, when a wire is moved up and down between the two poles of horseshoe magnet. Then electric current flow or electric current is produced in the wire. Then electric current is produced in the wire.
This is the electromagnetic induction. Electromagnetic induction. इसमें बेटा होर्सशू मैग्नेट आपका इस शेप में होता है. That one is your horseshoe magnet. Here is North Pole, here is South. This one is the horseshoe magnet. इसमें आप क्या करोगे, वायर को कनेक्ट करोगे गैल्वेनोमीटर के साथ, देन मूव अप एंड डाउन, वायर को मूव करोगे इन दो पोल्स के सेंटर में अप एंड डाउन बहुत तेजी से, दैट इज रैपिडली, एंड देन करंट इज प्रोड्यूस्ड. दिस फिनोमेना इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. गैल्वेनोमीटर आपका क्या है, दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट. यू कैन ऑल्सो नोट डाउन गैल्वेनोमीटर used to detect small amount of current. Small amount of current. And symbol for galvanometer is, that is this one, G. Here positive, here negative. Note down बच्चे. Okay. Now next टर्म बेटा जो आपकी है, that one is induced current. Induced current. Now induced current बेटा आपका क्या है, the current produced by, write down, the current produced by moving a straight wire in magnetic field, or vice versa, or moving a magnet in the coil, or vice versa, that current is said to be induced current, is called induced करंट. हेयर बच्चे जो आपको ध्यान रखना है, करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेट की वजह से, मैग्नेटिज्म की वजह से. नोट डाउन बेटा.
And this one is discovered by, this is just for your knowledge, you can write down up to here, discovered by British scientist Michel Faraday and Joseph Henry. And this led to the construction of generators. This phenomenon led to the construction of generators. So generators are based on the term induced current. Note down the check. Okay. Just note down which is the process of electromagnetic induction. The process of electromagnetic induction. The process of electromagnetic induction has led to the generation or has led to the construction of generators. Construction of generators for producing electricity, at power stations. Note down मुझे. Okay. Now बच्चे बात आती है, how can you find the direction of induced current? So for finding the direction of induced current, we use the rule that is called Fleming's right hand thumb rule. Fleming's right hand thumb rule. What is this rule says? According to this rule, if you stretch your forefinger middle finger and thumb, that are these three fingers.
Just look at my hand. These are three fingers mutually perpendicular to each other if you stretch it. And thumb. Three fingers आगे बेटा आपकी. This one is your thumb. This one is your middle finger, and this one is your forefinger. And if thumb points along the direction of motion of conductor, and forefinger points along the direction of magnetic field. Forefinger points along the direction of magnetic field. Then your middle finger points along the direction of induced current. This rule is important, बच्चे. So you will understand or you learn it. Now three fingers हैं आपके पास. I repeat again. उसमें से thumb आपका क्या कर रहा है? That gives the direction of motion of conductor. Thumb. If you stretch it mutually perpendicular to each other, then thumb gives the direction of motion of conductor. And forefinger क्या दे रहा है आपका? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. और आपका जो मिडिल फिंगर है, that gives you the direction of induced current. Note down बच्चे. Okay. ना बच्चे अब तक आप तीन रूल कर चुके हो. तीनों का कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा सा, कैसे आपको लर्न करना है. फर्स्ट रूल जो आपने किया था, राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. ये रूल बेटा कब अप्लाई हो रहा है? व्हेन यू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड. ये रूल आपको कब अप्लाई करना है? व्हेन यू होल्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर in your right hand, this one. Thumb gives the direction of current and curved finger gives the direction of magnetic field. Now बच्चे आपको जो सेकंड रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो कब आपको अप्लाई करना है? व्हेन करंट कैरिंग conductor placed in magnetic field.
देन कौन सा रूल अप्लाई होगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। और जब आपका बच्चे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट आपने फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, देन आपने रूल कौन सा अप्लाई करना है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ना दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं बेटा। इसमें आपने स्ट्रेच तो 3 फिंगर्स ही करनी है। फिंगर्स बोथ केसेस में सेम है, दैट इज 4 फिंगर, मिडल फिंगर, एंड थंब। इस केस में भी 3 ही फिंगर्स हैं, 4 फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब। यहां से बेटा आपको इजीली लर्न हो जाएगा। ना बोथ केसेस में 4 फिंगर आपको क्या बता रहा है? दैट इज गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। You can learn from F, that is 4 finger और मैग्नेटिक फील्ड। एंड आपको बच्चे थंब क्या बता रहा है? थंब gives you the direction of force, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस केस में आपको थंब क्या बता रहा है? मोशन। यहां पे मिडल फिंगर किसकी डायरेक्शन दे रही है? करंट की। और यहां पे क्या डिफरेंस आ जाएगा? ओनली दैट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। यहां से आप इजीली लर्न कर सकते हो। 4 फिंगर बोथ केसेस में मैग्नेटिक फील्ड, ओनली डिफरेंस कहां पे आया? थंब का क्या दे रहा है यहां पे? फोर्स, और थंब यहां पे मोशन शो कर रहा है। इस केस में मिडल फिंगर करंट, and in this case gives you the direction of induced current, that is right hand rule. Note down बच्चे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बेटा, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। दैट इज डीसी और एसी, डीसी और एसी। सीबीएसई स्टूडेंट्स को इस सेशन के लिए टॉपिक नहीं करना है, दैट इज डिलीटेड फ्रॉम द चैप्टर। फॉर अदर बोर्ड्स we can discuss the topic in the next lecture, and if you like my lecture then please
subscribe, like and share Prosperous Academy. That is the name of my YouTube channel. Thank you and have a nice day. Hello everyone, hope you all are good. Today we start with the topic direct current and alternating current. Write down the topic direct current and alternating current. And alternating current. For this session, CBSE students not doing this topic because this is deleted from the syllabus 2020 or 21 for this session. But here we discuss for other students direct current, that is DC in short form, and alternating current, that is AC in short form. First we discuss with the direct current. Write down direct current or DC. As it is clear from the word direct, direct means to say that in Hindi we can say that सीधा. So current that flows only in one direction. Current that flows only in one direction is called direct current. Is called direct current. In short form, it is represented by DC. For example, write down, for example, current that is obtained from cell or battery. Current that is obtained from cell or battery is direct current. Is direct current. ग्राफिकली बच्चे इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्ट्रेट लाइन. ग्राफिकली it is represented by straight line. Parallel to time axis.
So here if you draw the graph for direct current, that is this one. Here is time. That one is x-axis. Here is current. So it is represented by a straight line parallel to time axis. That is a direct current. Direct current or DC. Note down बच्चे. Some sources of DC are, write down, some sources of DC are dry cell, car battery, or DC generator, or DC generator. Note down बच्चे. Here just correct the word battery. Okay. Next one is alternating current. Next one is alternating current. अल्टरनेटिंग करंट क्या है बेटा आपका? करंट दैट फ्लोज फर्स्ट इन वन डायरेक्शन then second it changes its direction, then secondly it changes its direction. Note down बच्चे. Or in simple words, you can write that current that reverses its direction, current that reverses its direction after regular intervals of time, after regular intervals of time. After regular intervals of time is called alternating current.
is called alternating current. Short form for alternating current is short form for alternating current is AC. Note down. Next which graph for alternating current, that is represented by this one. First one is this, second one is this. Here time, here current. That one is Y. X is that one is X. Here straight line shows DC and this one shows AC. Direct current and alternating current. AC बच्चे, this one is positive cycle. Upper cycle is called positive cycle and lower one is called negative cycle. Note down बच्चे. You can write down some source for AC, some source for AC current for AC are powerhouse generators, bicycle dynamos, or car alternators, Note down beta. Okay. Next topic is advantages of AC over DC or advantages of alternating current over direct current. Write down advantages of AC over DC. One of the most important advantage of AC is, first point, that it flows over long distances. AC, alternating current
flow very long distances without much loss of energy. Without much loss of energy. Note down बच्चे. Or you can write down it can be transmitted over very long distances. In place of alternating current flow, you can write down it can transmitted over very long distances. Note down बच्चों. Second point is alternating current can be controlled. Alternating current can be controlled by choke coil. Alternating current can be controlled by choke coil without much loss of energy. Without much loss of energy. Note down बच्चे. But on the other hand, direct current क्या है बेटा? Direct current can be controlled by ohmic resistance. Ohmic resistance with much loss of energy, or energy loss in the form of heat. Energy loss in the form of heat is very high. I repeat, अल्टरनेटिंग करंट क्या है? ट्रांसमिट कर सकते हैं बेटा ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस. इनकी सप्लाई लॉन्ग डिस्टेंस पे कर सकते हैं और इसमें एनर्जी का लॉस भी क्या होगा? कम होगा. बट ऑन द अदर हैंड डायरेक्ट करंट में एनर्जी लॉस ज्यादा है. और दिस वन इज कंट्रोल्ड बाय चोक कॉइल. अल्टरनेटिंग करंट को किससे कंट्रोल करते हैं हम लोग? चोक कॉइल से. बट इसमें एनर्जी लॉस फिर से कम है. बट इन दिस केस डायरेक्ट करंट में ओहमिक रेजिस्टेंस. डायरेक्ट करंट किससे कंट्रोल करते हैं? ओहमिक रेजिस्टेंस से. बट इस केस में एनर्जी लॉस दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट इज वेरी हाई. नोट डाउन बेटा. थर्ड पॉइंट इज alternating current equipments. Alternating current equipments are more durable. Are more durable. Durable means to say that beta इनको लॉन्ग टाइम तक यूज किया जा सकता है. ये जल्दी खराब नहीं होते.
are more durable and convenient as compared to direct current equipments, direct current or DC equipments. Note down beta. Okay. Next topic that we discuss today is electric motor. Write down electric motor. First of all, motor. A motor is a device that converts electrical energy into mechanical energy. First, you can write down a motor is a device which convert electrical energy into mechanical energy. Note down बच्चे. And it can be used in, or electric motor is used in electric fans. It is used in, note down, it is used in electric fans, washing machines, refrigerators, नेक्स्ट थिंग बच्चे, जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक मोटर है दैट वर्क्स ऑन डीसी. इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन डीसी करंट. इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन डीसी करंट. So it is called DC motor. So it is called DC motor or direct current motor. Direct current motor. Note down बच्चे.
Okay. Next one I have, which is principle of electric motor. Now down. Principle of electric motor. Principle of electric motor. So it works on the principle, or a motor works on the principle that a motor works on the principle that when a rectangular coil is placed between north and south pole, north or south pole, or you can write down magnetic field, magnetic field, and current is passed through it, and current is passed through it, it experiences a force. It experiences a force which rotates it continuously, which rotates it continuously. Here बच्चे क्या है, when you place a rectangular coil between north and south pole, or simply you can write down rectangular coil किसके बीच में पड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. और जब आपने कॉइल के अंदर से करंट पास किया विद द हेल्प ऑफ बैटरी, कॉइल पे एक फोर्स अप्लाई होगा. बिकॉज ऑफ दैट कॉइल क्या करेगा, रोटेट करेगा कॉन्टिन्यूसली. मीन्स टू से दैट मोटर आपकी चलनी स्टार्ट हो जाएगी और रोटेट करेगी कॉन्टिन्यूसली. नोट डाउन बच्चे. और सिंपली यू कैन राइट डाउन it utilizes or it uses magnetic effect of current. It uses magnetic effect of current. Magnetic effect of current. One thing more, CBSE स्टूडेंट्स को ये टॉपिक करना है, इलेक्ट्रिक मोटर. ये आपके सिलेबस से डिलीट नहीं हुआ है. यू कैन डू दिस. नोट डाउन बच्चे. ओके. Next बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मोटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर.
इस केस में बेटा आपका डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ द टू पोल्स, और मैग्नेटिक पोल्स. Here a rectangular coil that is from here in this way. Here this one is the axle. Now बच्चे आपको क्या करना है, two split rings. Here you just draw two split rings. Now here two brushes. And this one is connected to the battery. Here is a key, that is K. And current, name of the rectangular coil is ABCD. Here जो आपकी बेटा ब्रश है that is X and Y, और जो आपकी स्प्लिट रिंग्स हैं that is P and Q. P and Q मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं थोड़ा. स्प्लिट रिंग्स आपकी क्या हैं, P and Q. और जो आपके ब्रशेस हैं बेटा X and Y. X and Y. Here current flows from this one A to B through the help of battery, and it outs from C to D. This one is your axle. Key and battery, positive and negative. Draw the diagram, बच्चे. Now little bit बच्चे आप नोट डाउन कर लो साथ में. It consists of a rectangular coil. It consists of a rectangular coil ABCD, which is placed in magnetic field, which is placed in magnetic field. Note down बच्चे. Next is it is made up of insulated copper wire. Insulated copper wire.
नाउ बच्चे जो आपकी कॉइल है, द कॉइल ABCD that is placed in the magnetic field in such a way that arm AB and CD are perpendicular to the direction of magnetic field, are perpendicular to the direction of magnetic field. Note down बच्चे. नाउ बच्चे जो आपके एंड्स हैं कॉइल के, द एंड्स ऑफ द कॉइल, द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू two halves, are connected to two halves split rings. Split rings, here split rings P and Q. P and Q. और जो आपकी बेटा स्प्लिट रिंग्स की इनर साइड है, दैट इज कंडक्टिंग. इनर साइड ऑफ P and Q are conducting and attached to axle, and attached to axle. और जो आपके एक्सटर्नल एजेस हैं, द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेस ऑफ स्प्लिट रिंग्स, द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेस ऑफ स्प्लिट रिंग्स are connected to brushes, are connected to brushes X and Y, X and Y. Now here we discuss again, it consists of a rectangular coil ABCD. This one, it consists of a rectangular coil ABCD which is placed in the magnetic field, that is north or south. North or south. Next is, it is made up of insulated copper wire. जो आपका coil है ABCD, that is made up of insulated copper wire. और आपका coil इस वे में है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और जिसकी वजह से AB और CD इन सच ए वे, इस वे में प्लेस किया हुआ है कि AB और CD क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. परपेंडिकुलर मींस टू से दैट एट 90 डिग्री. और जो बच्चे आपके कॉइल के एंड्स हैं, दीज आर द एंड्स ऑफ द कॉइल. ये किससे कनेक्टेड है? फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर कनेक्टेड टू द स्प्लिट रिंग्स. हियर आई शो यू द स्प्लिट रिंग्स, दैट इज P and Q. इनर साइड जो P and Q की है कंडक्टिंग, और जो
outer side that is connected to the brushes X and Y. This is all about the construction. Note down बच्चे. Okay. नेक्स्ट बच्चे इसकी वर्किंग. You just change here. In case of construction, now you write down working of electric motor. नाउ वर्किंग के केस में बच्चे क्या है, पहले मैं आपको समझा देता हूं. इस केस में करंट जो एंटर करेगा विद द हेल्प ऑफ बैटरी, करंट जो एंटर करेगा फ्रॉम ए टू बी और ए बी, और आउट किससे करेगा, फ्रॉम सी डी. करंट एंटर करेगा फ्रॉम ए टू बी और आउट करेगा फ्रॉम सी टू D. So first you write down, or simply you can write down current enters from brush X. Simple way में current enters from brush X and back to the battery through brush Y, and back to the battery through brush Y. नाउ बच्चे जो आपका करंट है ए बी में, दैट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, करंट इन द आर्म ए बी, करंट इन आर्म ए बी flows from A to B, flows from A to B. और आर्म सी डी में क्या है, दैट इज फ्रॉम, flows from C to D, जो कि आपका अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए बी है. मीन्स टू से दैट हेयर करंट ए टू बी और हेयर करंट दैट इज सी टू डी, अपोजिट टू द आर्म ए बी. अब बेटा आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हो और फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो. Here you can simply learn that when you apply the Fleming's left hand rule, when you apply the Fleming's left hand rule, यहाँ मेंशन कर लो बेटा, apply Fleming's left hand rule. इस केस में बच्चे जब आपने अप्लाई किया तो you have to find the direction of force that is acting on the coil, that is acting on the coil. अब बच्चे इस केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि ए बी क्या करेगा, मूव डाउनवर्ड्स, ए बी मूव्स डाउनवर्ड्स और सी डी मूव्स अपवर्ड्स,
CD moves upwards. मीन्स टू से दैट जब आपने अप्लाई किया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको फाइंड आउट हो गया और आपको मिल गया ए बी किस तरफ मूव करने लग जाएगा, डाउनवर्ड्स, एंड सी डी मूव्स अपवर्ड्स. अब बच्चे जो आपका एक्सल है दैट इज फ्री टू मूव और एक्सल आपका रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा. अब एट हाफ रोटेशन क्या होगा, Q मूव टू P साइड एंड P मूव टू Q साइड. मीन्स टू से दैट आपका जो ब्रश Q है मेक्स कांटेक्ट विद ब्रश X. स्प्लिट रिंग्स क्या है, Q मेक्स विद द ब्रश X. सो Q टच करेगा बेटा आपका X को एंड P आपका टच करेगा Y. Here you know that P and Q are the split rings. X and Y is the brushes. मैं यहां सिंपल वे में आपको समझा रहा हूं. यू कैन राइट इन योर फॉर्म. नाउ करंट का डायरेक्शन आपका क्या हो गया है, एट हाफ रोटेशन आप मेंशन कर लो, एट हाफ रोटेशन. एट हाफ रोटेशन पे बेटा क्या होगा आपका, Q makes contact with the brush X. Q makes contact with brush X and P with brush Y. So here करंट का डायरेक्शन बच्चे आपका क्या हो जाएगा, DCBA. मीन्स टू से दैट आपका करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया. यू जस्ट नोट डाउन, देन वी कंटिन्यू. ओके. Now बच्चे we continue from at half rotation. At half rotation क्या हुआ बेटा आपका, that is Q makes contact with the brush X. Q makes contact with brush X and P with Y. Means to say that आपका direction of current भी क्या हो गया, reverse हो गया. So here you can write down direction of current gets reversed. Direction of current gets reversed. Now first move कर रहा था AB CD. Now अब कहां से move करेगा, DC BA. So current का direction क्या हो गया, that is from DCB A. Now बच्चे आपका यहाँ करंट रिवर्स हो रहा है. That is a device that reverses the direction of current. A device that reverses the direction of current is called commutator. Commutator. Here split rings act as a commutator. Here split rings act as a commutator. मीन्स टू से दैट यहाँ आपकी स्प्लिट रिंग्स हैं जो आपकी वो करंट की डायरेक्शन को क्या कर रही हैं, रिवर्स कर रही हैं. नोट डाउन बच्चे.
ना बच्चे, अब जो आर्म आपकी ए बी डाउनवर्ड थी वो कहां पे आ गई? अपवर्ड। ए बी दैट मूव्स अपवर्ड and CD that moves downward. और ये प्रोसेस आपका रिपीट होता जाएगा बेटा, और आपकी मोटर क्या है? कॉन्टिन्यूसली रोटेट होती जाएगी. सो राइट डाउन this process repeats. This process repeat again and again, and motor rotates continuously, and motor rotates continuously. So this is all about the working of electric motor. Note down बच्चे. Okay. Now in the next lecture we discuss about the generators, AC generator and DC generator or domestic electric circuit, which is not included in the syllabus for CBSE students for this session 2020 and 21. And if you like my lecture bache, I hope you well understand the construction working of electric motor as well as DC and AC. And if you like my lecture, then please subscribe, like and share my YouTube channel Prosperous Academy. Thank you and have a nice day. Hello everyone, hope you all are good. Because of the occasion of Diwali, we all are busy. So after a long break, we again start with our study of class 10th, chapter 13, that is magnetic effect of electric current. In my last lecture, I just discussed about the simple electric motor. Now beta, in case of simple electric motor, if we use the commercial electric motor, then what is the difference? Note down, the commercial motor use the commercial motor use, first point is an electromagnet in place of a permanent magnet. First is an electromagnet
in place of permanent magnet. Second point is large number of turns of conducting wire in the current carrying coil. Large number of turns, large number of turns of conducting wire in the current carrying coil, of the conducting wire in current carrying coil. Third point is, note down, a soft iron core on which the coil is wound. A soft iron core on which the coil is wound. Fourth point is the soft iron core, the soft iron core on which the coil is wound, on which the coil is wound, plus the coil is called, plus the coil is called armature. That is armature. Underline armature. That is commercial motor. Thus, it enhances the power of motor. Armature क्या करता है बेटा? It enhances the, means to say that increase. It enhances, ब्रैकेट में आप लिख लो increase the power of motor. The power of motor. We repeat again all points. First of all, सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर में हमने डिस्कस किया था ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन. कमर्शियल मोटर अगर उसकी जगह पे आ जाता है तो उस केस में जो रिप्लेसमेंट होगी, पहली रिप्लेसमेंट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट. सिंपल मोटर में क्या यूज कर रहे हो आप? परमानेंट मैग्नेट. बट इन केस ऑफ कमर्शियल मोटर यू यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेट. You just well known about the electromagnet. Second point, large number of turns of the conducting wire. Means to say that number of turns क्या होगी? Increase हो गई. Third point, a soft iron core, जिसपे आपका coil क्या है? Wound किया हुआ है. हिंदी में अगर कहें तो लपेटा हुआ है. The soft iron core और जिसपे coil है आपका wound किया हुआ, उसको combine क्या कहते हैं? Armature. ये क्या करता है? मोटर की पावर को इंक्रीज कर देता है. नोट डाउन द पॉइंट्स, देन वी अगेन कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट टॉपिक. Okay.
नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। राइट डाउन इलेक्ट्रिक जनरेटर। This topic is reduced from the syllabus of CBSE due to the COVID-19 situation. So just discuss for the sake of knowledge, that is electric generator. Means to say that आपने अभी ये टॉपिक इस सेशन के लिए नहीं करना। नोट डाउन बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर क्या है? राइट डाउन द इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस, और इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which converts mechanical energy into electrical energy, which converts mechanical energy into electrical energy. नोट डाउन बच्चे। और it produces electric current or electricity. It produces electric current or electricity. Note down. Next is a small generator. A small generator is called dynamo. Is called dynamo. Generators are of two types. Generators are of two types. First one is AC generator. First one is AC generator. Second is DC generator. You well known about the AC or DC. AC, that is alternating current generator. Alternating current generator. And DC is direct current generator. DC is direct current generator. Note down बच्चे।
Now first we start with the AC generator. Note down. AC generator. That is your alternating current generator. First of all, principle बच्चे, principle write down. AC generator depends on, or AC generator works on the principle, works on the principle. Principle means to say that here सिद्धांत. हिंदी में अगर उसका वर्ड मीनिंग आप लोगे, मीनिंग लोगे, दैट इज सिद्धांत. किस सिद्धांत पे वो काम करता है? सो एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल that when a conductor is moving, when a conductor is moving in a magnetic field, in a magnetic field, then current is induced, then current is induced in the conductor, in the, note down the principle. Then we carry on the construction of generator. Okay. Next is construction of an AC generator. Construction of an AC generator. First of all, draw the diagram. There are two magnetic fields. Here, just draw the diagram, beta. There are two poles. First one is north, second is south. North and south, a rectangular coil ABCD is placed in a magnetic field that is attached to an axle. Now here completing R1 and R2. First you connect this with, second is this. Now from here you just connect with the galvanometer, or here is a key, or just draw the galvanometer. That is A, B, C or D. And rings R1 and R2. These are the rings R1
and this one is the R2. Here brushes, that are the brushes B1, and this one is attached brushes B2. Draw the diagram, बच्चे. Now just draw the direction of current, that is this one. Now here, in brief, we just discuss the construction. A rectangular coil ABCD, it consists of, write down, it consists of a rectangular coil ABCD placed between the two poles of permanent magnet. Placed between the two poles of permanent magnet. Permanent magnet. Next is the two ends of the coil. The two ends of the coil, these are the two ends of the coil, are connected to rings R1 and R2. It is clear from the diagram, that is two ends of the wire, here and here, rings connected to rings R1 and R2. Note down. Next is inner side of the rings are, inner side of the rings are insulated. Note down the chain. Next is two brushes B1 and B2, are kept or pressed separately on rings R1 and R2. Here are the brushes B1 and this one is the brush B2. Note down the chain. Now जो ये रिंग्स हैं बेटा आपकी, the two rings, note down, the two rings
internally attached to an axle. Internally attached to an axle. Now basically हम इस एक्सल को ही रोटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आउटर सोर्स. उसकी वजह से कॉइल क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, मूव होना स्टार्ट होता है इन द मैग्नेटिक फील्ड और आपका करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है. Write down the axle may be rotated from outside. The axle may be rotated mechanically from outside. From outside to rotate the coil internally. To rotate the coil internally in magnetic field. In magnetic field. Note down बच्चे. Task is outer end of the brushes B1 and B2 are connected to galvanometer. Outer end of brushes are connected to galvanometer. You just well known about the galvanometer to show the flow of current in the given electric circuit. To show the flow of current in the given electric circuit. In the given electric circuit. Note down बच्चे. This one is a construction. I just repeat again. You just see in the diagram. It consists of a rectangular coil A, B, C, D. Placed between the two poles of magnet, permanent magnet, north and south. Now, the two ends of the coil. These are the ends. Here is the first end. Here is the second. Two ends of the coil are connected to rings R1 and R2. Then inner side जो आपका रिंग्स का है वो इंसुलेटेड है. Two brushes kept pressed separately. यहाँ पे दो ब्रश बच्चे प्रोवाइड किए गए हैं रिंग के साथ B1 एंड B2. R2 के साथ आपका B2 है, R1 के साथ आपका B1. अब बच्चे बेसिकली क्या करते हैं, टू रिंग्स क्या हैं, एक्सल के साथ अटैच है. दिस वन इज योर एक्सल. अब बेसिकली हम क्या करते हैं, एक्सल को रोटेट करते हैं फ्रॉम आउटसाइड मैकेनिकली और उसकी वजह से कॉइल आपका रोटेट होता है. और फर्दर जो आपकी ये कॉइल है वो किससे अटैच है, गैल्वेनोमीटर से, जो क्या करता है, करंट की प्रेजेंस को शो कर देता है. नोट डाउन द कंस्ट्रक्शन बच्चे.
Okay, this is the construction. Now we discuss about the working of AC generator. Now here just change working of an AC generator. Working of an AC generator. Now बच्चे आपका first of all axle rotate होता है. Suppose in this case when the axle attached to two rings is rotated. जब आपका axle क्या हुआ rotate होना start हुआ, that is from outside. Write down when axle is rotated. When axle is rotated attached to two rings. Attached to two rings in such a way or such that arm AB moves up and arm CD moves down. Arm AB moves up and arm CD moves down. In the magnetic field, in the magnetic field produced by permanent magnet, produced by permanent magnet. Now बच्चे we assume that or we suppose that coil ABCD is rotated clockwise. Let us say that coil ABCD is rotated clockwise. Here is the important point. Coil ABCD rotated clockwise. Note down. So by applying Fleming's right hand rule, the induced current not on which the induced current are set up in these arms along the direction along the directions AB and CD. Along the direction AB and CD. Note down बच्चे.
नाउ इंड्यूस करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर गया बच्चे, ए बी सी डी। इंड्यूस करंट फ्लोज ए बी सी डी। नोट डाउन बच्चे। So the induced current flow, so the induced current flows in direction A B C D, in direction A B C D। और इस केस में अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो बच्चे हर केस में करंट क्या होता जाएगा, आपका एडअप होता जाएगा। So note down, if there are large number of turns in the coil, the current generated in each turn, adds up to give a large current, Note down बच्चे। And this means that current in the external circuit flows from B2 to B1. Write down. This means that current in the external circuit flows from B2 to B1. Note down बच्चे। तो जस्ट रिपीट अगेन। अब जब बच्चे आपका एक्सल रोटेट करना स्टार्ट कर गया जो कि टू रिंग्स के साथ अटैच्ड है, मींस टू से दैट आपने सपोज कर लिया कि आर्म ए बी मूव्स अप एंड आर्म सी डी मूव्स डाउन। जो आपका आर्म ए बी है वो मूव्स अप और आर्म सी डी जो आपका है मूव्स डाउन। नाउ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय परमानेंट मैग्नेट, अब हमने सपोज कर लिया कि एबीसीडी में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है दैट इज रोटेटेड, और जो आपका कॉइल है एबीसीडी वो कैसे रोटेट कर रहा है, दैट रोटेटेड क्लॉकवाइज। अब जब बच्चे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई किया, सो इंड्यूस करंट आपका अलोंग द डायरेक्शन ए बी एंड सी डी, मीन्स टू से दैट ए बी सी डी करंट फ्लो कर गया। अब अगर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है इस कॉइल में तो हर टर्न में करंट क्या होता जाएगा, एड्स अप होता जाएगा और आपको एक लार्ज करंट की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी।
और जो आपका एक्सटर्नल सर्किट में है वो करंट कहां से फ्लो करेगा, सपोज B2 टू B1, हियर B2 टू B1 एक्सटर्नल, this one is external, B2 to brush B1. Note down the thing. Then we continue with the working. Okay. So we continue with the working. After half rotation, note down बच्चे, after half rotation. अब बच्चे जब आपकी हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गई तो आर्म CD क्या हो जाएगा आपका, स्टार्ट्स मूविंग अप, आर्म CD स्टार्ट्स मूविंग अप and arm AB starts moving down, and arm AB starts moving down. नाउ बच्चे आपका इस केस में इंड्यूस करंट जो है उसकी डायरेक्शन क्या हुई, चेंज हुई. सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन बोथ आर्म्स चेंजेस. मीन्स टू से दैट आपका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या हो गया, दैट इज DCBA. So it give rise to the direction of induced current, or it give rise to direction of induced current in DCBA. फर्स्ट आपका ABCD था, अब आपका हाफ रोटेशन पे क्या हो गया, DCBA. नोट डाउन बच्चे. और आपका जो करंट है एक्सटर्नल सर्किट में, नोट डाउन द करंट इन एक्सटर्नल सर्किट, इन external circuit flows from B1 to B2. पहले आपका ABCD था, उस टाइम पे आपका एक्सटर्नल क्या था, B2 टू B1. जब आपका रोटेट हुआ हाफ रोटेशन पे सब कुछ चेंज हो जाएगा, दैट इज करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा और आपकी रोटेशन भी चेंज हो जाएगी, दैट इज DCBA. और जो एक्सटर्नल है आपका वो कहां से फ्लो कर जाएगा, दैट इज फ्रॉम B1 टू B2. Note down, thus after every half rotation, thus after every half rotation, thus after every half rotation, the polarity of current in the respective arms changes. The polarity of current in respective arms changes, and this current is called
alternating current. Note down, such a current which changes direction after equal intervals of time, which changes direction after equal intervals of time, is called alternating current. So this is all about the working of AC generator. Note down बच्चे. Okay. Now some basic information about AC current. Note down बच्चे, that is not included in the AC generator. Just AC current के बारे में कुछ basic information बच्चे. जो आपका alternating current है इंडिया में प्रोड्यूस होता है, has a frequency of 50 Hz. Note down, the alternating current or AC produced in India has a frequency of in India has a frequency of 50 Hz. Hz. Here I use the word Hz that represent Hertz. That is a unit of frequency. This means that आपका coil जो है वो rotate करेगा at the rate of 50 revolution per second. Means to say that 50 Hertz means to say that coil rotate 50 revolution, or coil is rotated at the rate of 50 revolution per second. अब बच्चे आपने टॉपिक में रीड कर लिया कि करंट जो है आपका एक रेवोल्यूशन में 2 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करता है. करंट जो है आपका 1 रेवोल्यूशन में 2 टाइम्स डायरेक्शन चेंज कर रहा है. सो 50 रेवोल्यूशन में कितना हो गया बच्चे? It changes for 100 times. That is 2 into 50. 2 into 50, 100 times. Note down बच्चे. ओके. नाउ बच्चे आपका एसी जनरेटर कहाँ यूज होता है? दैट आर यूज्ड इन द पावर हाउस स्टेशंस. एसी जनरेटर्स
are used in powerhouse stations. Powerhouse stations to generate electricity. To generate electricity. Which is supplied to our homes. Which is supplied to our homes. Note down बच्चे. Another name of AC generator is alternators. AC generator are commonly known as alternators. The bicycle dynamos are small AC generator. No down बच्चे. Okay. Now here बच्चे we just describe the simple AC generator. In practical generators, the voltage and the current produced can be increased. Here we just describe simple AC generator if we use practical generators. Note down, practical generators we increase voltage, and the current. और बच्चे वो कैसे इंक्रीज कर सकते हो? नोट डाउन. फर्स्ट पॉइंट इज by using a powerful electromagnet. Note down. Second is by winding a coil. Around soft iron core. Note down बच्चे. To increase the strength of magnetic field. To increase the strength of magnetic field. Third is by using a coil with more turns.
by using a coil with more turns. Note down. Fourth is by rotating the coil faster. By rotating the coil faster. So by using all these, we just increase the voltage and current in practical generators or practical AC generators. Note down, bache. Okay. Now next is DC generator. Next is DC generator. Note down, bache. The difference is that to get a direct current, a split ring commutator must be used. DC generator में जो आपकी ये rings हैं R1 and R2, here we just use the split rings commutator. Split rings commutator. आप split ring commutators की working in motor I just describe. You just see there in the motor. By using split rings commutator, you get the direct current. You get the direct current. I repeat again, in case of rings R1 and R2, you just use split rings commutator. So it converted to the DC generator. Note down, bache. Next, note down, one brush is at all times in contact with the arm, moving up in the field, while the other is in contact with the arm moving down, while the other is in contact with arm moving down, Note down, bache. So this is all about the DC generator. You just use split rings commutator. We just see the working of split ring commutator in the case of electric motor. You go there, you just well understood about the working of split rings commutator. I again repeat, split rings commutator are used to get the direct current in case of rings R1 and R2. Note down, bache.
Okay. So this is all about the AC generator and DC generator. Next topic is domestic electric circuit. Note down domestic electric circuit. So this is the last topic of this chapter number 13, that is magnetic effect of electric current. We discuss it in the next lecture. I hope you well understand my lecture. If you like my lecture, then please subscribe, like and share my YouTube channel Prosperous Academy. Thank you and have a nice day. Hello everyone, hope you all are good. Today we start with the topic domestic electric circuit. Write down domestic electric circuit. So as it is clear from the topic name, domestic means to say that in our homes we get the supply of electricity with the help of underground cables or overhead electric poles. And how domestic electric circuit look like, you well understand with the help of our diagram. So first of all, we just draw a diagram of domestic electric circuit. First of all, you draw electricity board fuse, that is electricity board fuse. Second one is you draw electric meter, electric meter. Now you draw the wires. That one is two wires here. First one is live wire, that is live wire. Second one is neutral wire. First one is live, read as live, that is LAAIVE, live wire. So these wires are differentiated with the different colors. So first of all, you note down the colors of live wire, that is red or brown. Live wire का कलर बच्चे किस, that is red or brown. Means to say that आपका लाइव वायर किस कलर का होता है, रेड, और रेड हो सकता है या ब्राउन भी हो सकता है. सेकेंड वन जो वायर आप यूज कर रहे हो, दैट इज न्यूट्रल वायर, उसका कलर क्या है बेटा, ब्लू और ब्लैक.
न्यूट्रल वायर का कलर कौन सा है? दैट इज ब्लू और black. Now you connected with a bulb or LED. That is in this way. That is your electric meter. अब बच्चे आपको कलर लाइव वायर का क्लियर हो गया कि रेड और ब्राउन. सेकेंड वन इज न्यूट्रल वायर. Then you connected with the distribution box. Third one is your distribution box. इस बॉक्स में बेटा क्या क्या है आपके पास? कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूज फॉर ईच सर्किट. कंटेनिंग मेन स्विच and fuse for each circuit. Fuse for each circuit. Here you just draw. Then this one. Now in the last, that is your supply to different appliances. Supply to different appliances, that is you just draw this one and this is this or this one. This is this one. Last is here. You draw in this way. You get more clear about this. Here just you draw in this way. Now last one here. Are you connected with this one? Now जो लास्ट वायर है आपका बच्चे, that is called earthing or earth wire. That is your earth wire. In this way you can draw.
here you just mention earth wire, or that is also named as earthing. ना बच्चे जो आपका अर्थ वायर है वो किस कलर का है, येलो और ग्रे। अर्थ वायर का कलर क्या है, येलो और ग्रीन। बेसिकली जो ज्यादा यूज करते हैं लाइव वायर के लिए रेड कलर, न्यूट्रल वायर के लिए ब्लैक, और जो आपका अर्थ वायर है दैट इज ग्रीन कलर मैक्सिमम यूज करते हैं इन सर्किट और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब बच्चे यू वेल अंडरस्टैंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, और here supply of 220 volt, you can mention 220 volt. Note down the diagram बच्चे first of all. ओके, नाउ बच्चे जो आपका लाइव वायर है दैट इज एट द पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट। लाइव वायर आपका किस पोटेंशियल डिफरेंस पे है, दैट इज 220 वोल्ट। और जो आपका न्यूट्रल वायर है दैट इज एट ग्राउंड पोटेंशियल ऑफ 0 वोल्ट। न्यूट्रल वायर आपका that is ground potential of 0 volt. So net potential difference that is used in India is 220 volt minus 0 volt, that is your 220 volt. So in India we use potential difference 220 volt in our domestic electric circuit. Now I hope you well understand with the help of a diagram domestic electric circuit. क्या क्या यूज होता है उसमें बच्चे, आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जहां पे आपके एमसीबीज, अब क्या है पहले फ्यूज वायर यूज करते थे, अब क्या है एमसीबीज। जब भी वोल्टेज अप और डाउन होता है एमसीबी क्या हो जाता है, डिप कर जाता है, मींस टू से दैट नीचे गिर जाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई क्या होती है, कट हो जाती है और आपके गैजेट्स सेफ हो जाते हैं। यहाँ पे एमसीबी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मींस टू से दैट सर्किट को वो क्या करते हैं, बेसिकली ब्रेक कर देते हैं। दैट इज योर इलेक्ट्रिक मीटर that are installed outside our homes now these days. Draw the diagram and note down this बच्चे। Okay. Now, beta, it is important to note that in our homes we use two separate circuits in the house. That is, one is lighting circuit. One is lighting circuit. That works on 5 ampere fuse. That works on 5 ampere fuse. Second is
power circuit with a 15 ampere fuse. Second circuit is power circuit with 15 ampere फ्यूज ना दो सर्किट हैं जो बेसिकली हम अपने घरों में यूज करते हैं. वन इज लाइटिंग सर्किट, वो किस पे है 5 एम्पियर फ्यूज पे. सेकेंड इज पावर सर्किट दैट वर्क्स ऑन 15 एम्पियर फ्यूज. सो आपके लाइटिंग सर्किट में जो आपकी लो रनिंग डिवाइसेस हैं या पावर रेटिंग डिवाइसेस जिनकी कम है, दैट आर बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स. सो यहां पे इस सर्किट में हम क्या क्या यूज करते हैं बेटा, बल्ब्स हो गया आपके, ट्यूबलाइट्स होगी. और भी आप मेंशन कर सकते हो रेडियो एटसेट्रा. और आपका पावर सर्किट जो यूज होता है दैट आर यूज्ड फॉर पावर रेटिंग डिवाइसेस सच एज रेफ्रिजरेटर, एसी. दैट डिवाइसेस आर यूज्ड रेफ्रिजरेटर, एसी हो गए बेटा आपके, नो डाउट. नाउ जो बच्चे आपके सर्किट कनेक्ट होता है दैट आर ऑलवेज इन पैरेलल. यू नो दैट वी डिस्कस ऑलरेडी इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर what are the advantages of connecting electrical devices in parallel in comparison to the series. Next point जो आप नोट करोगे, all the switches are put in the live wire. All the switches are put in the live wire. Note down बच्चे. Okay. नेक्स्ट है बच्चे आपका अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. ना बेटा अर्थिंग है क्या आपका, earthing means to connect metal case of electrical appliances to the earth. Earthing means to connect the metal case of electrical appliance. To connect the metal case. That word is important. Metal case of an electrical appliance.
of an electrical appliance to the earth. To the अर्थ। और वहां पे पोटेंशियल बेटा आपका क्या है, एट जीरो पोटेंशियल, एट जीरो potential by means of a metal wire, by means of metal wire called earth wire, called earth wire. Note down the chain. So we already discussed that in domestic electric circuit 3 wires are used: live wire, neutral wire and earth wire. So earth wire, that is metal case, means to say that जैसे कूलर की बॉडी बेटा कैसी है, मेटल की है, उस केस में इसको हम क्या करते हैं, 3 पिन प्लग की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं। Write down, we connect the earth wire, we connect the earth wire with the metal case of the electrical appliances, or to the metal case of electrical appliances, by using a 3 pin plug, by using a 3 pin प्लग। इसका मेन बेनिफिट क्या है बेटा, अगर मेटल केस में बाय चांस करंट आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, विद द हेल्प ऑफ दिस अर्थ में चला जाता है और आप इलेक्ट्रिक शॉक से सेफ हो जाते हैं। और अर्थिंग किसको दी जाती है, ओनली दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच हैव मेटालिक बॉडी। So note down, we give earth connection to electrical appliances having metallic body, having metallic body. Note down the thing. सेकेंड पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो, अर्थिंग और किसको दी जाती है, विच आर लाइबल टू टच, विच आर लाइबल टू टच। हियर आई मीन टू से दैट जिन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम टच कर सकते हैं उनकी भी अर्थिंग प्रोवाइड की जाती है। सपोज बल्ब का अर्थिंग हम नहीं करते क्योंकि बल्ब को हम अगेन 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 टच नहीं करते बेटा। सो जैसे आपका कूलर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ऑल दिस अप्लायंसेस आर कनेक्टेड विद 3 पिन प्लग।
You just observe in your house or home 3 पिन प्लग के साथ ही वो अटैच होते हैं. हीटर हो गया आपका. So all these appliances are done with earth wire. Note down बच्चे. Okay. Next one is your electric fuse. Electric fuse. Fuse word we already discussed in electricity chapter. So that is a safety device. Note down. It is a safety device. First of all, it is a safety device. Of short length of tin plated. Of short length of thin tin plated copper wire. Thin tin plated copper wire. Note down with you. And second is it have low melting point. It have low melting point. अब बच्चे इसका melting point low है means to say that if current exceeds its value, means to say that अगर current की value by chance ज्यादा हो जाती है, current exceeds its value, in this case fuse wire get melts. Fuse wire get melt. और आपका इलेक्ट्रिसिटी सर्किट क्या है, ब्रेक हो जाएगा. एंड ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट. ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट. जो अब जब आपका सर्किट ब्रेक हो गया तो आपके गैजेट्स क्या हैं, सेफ हो गए. दैट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूज. अब बच्चे जो आपका करंट है वो आपका बेसिकली फ्लो करता है डोमेस्टिक वायरिंग, और जब उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है वो किस वजह से और किसकी वजह से होती है, दैट इज ड्यू टू द शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग. टू वर्ड्स, वन इज शॉर्ट सर्किटिंग, सेकेंड इज ओवरलोडिंग. So note down, extremely large current can flow. Extremely large current can flow in domestic electric circuit. In domestic electric circuit
under two condition or under two circumstances, under two circumstances. First is short circuiting. Second is overloading. Second is overloading. Now here we discuss this short circuiting and overloading in brief. So note down. First short circuiting बच्चे note down. Short circuiting. Short circuit means to say that इसमें क्या है बच्चे आपका when live wire touch with the neutral wire directly. Touching of live wire with neutral wire. Touching of live wire with neutral wire. With neutral wire directly is known as short circuiting. Short circuiting. सेकंड है ओवरलोडिंग. सेकंड इज ओवरलोडिंग. क्या है बेटा आपको ओवरलोडिंग मीन्स टू से दैट आपका वर्ड से ही क्लियर है कि लोड क्या हो गया आपका ओवर हो गया. मीन्स टू से दैट लोड आपका ज्यादा हो गया. मीन्स टू से दैट अगर इन अदर वर्ड्स वी कैन एक्सप्लेन इट एज ओवरलोडिंग व्हेन वी रन number of gadgets on one supply. So बच्चे इस केस में आप just note down if too many electrical appliances of high power rating. If too many electrical appliances of high power rating are switched on at the same time So this refers to overloading. And this is known as overloading. Note down मुझे. सेकेंड पॉइंट आप नोट कर सकते हो. ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो occur. Overloading can also occur
if too many electrical appliances, if too many electrical appliances are connected to single socket, are connected to single socket. This also refers to overloading. Note down below. So to prevent from short circuiting or overloading, we just use fuse. Fuse we already discussed as earlier. Now these days, in case of fuse we use MCB. In place of fuse we use MCB. You just find out the full form of MCB. What is the full form of MCB? And you can message me or comment me the full form of MCB. Note down below. One thing I will tell you, फ्यूज जो है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है, बट एमसीबी आपका मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है. नोट डाउन. या आप नोट भी कर सकते हो, इट वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. इट वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. बट जो आपका फ्यूज है that works on heating effect of current. Heating effect of current. Note down below. Okay. Next है बच्चे hazards of electricity और danger of electricity. Dangers of electricity. You already familiar with this topic. I just dictate you the topic. Dangers में बेटा आपका क्या क्या है, अगर कोई पर्सन लाइव वायर को टच करता है, so उस केस में he gets a severe electric shock. Second, short circuiting due to damaged wiring or overloading can also cause electric fire. Third one is the defects in the household wiring, like loose connection हो गया आपका, defective switches हो गए, sockets हो गए, plugs हो गए, can also cause sparking. So this is all about the hazards or danger. Next, precautions बच्चे आप क्या क्या ले सकते हो. Precautions in the use of electricity. Precautions in the use of electricity. Means to say that आप electricity handle करते वक्त क्या क्या सावधानियां यूज कर सकते हो बच्चे. Precautions. First of all, if a person touches the live wire accidentally, then first of all you should switch off the main supply so that all the circuit breaks.
सेकेंड पर्सन जो आपका लाइव वायर को टच करता है उसको हम क्या कर सकते हैं, इंसुलेटेड सपोर्ट दे सकते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ वुड, प्लास्टिक और रबर। आप कभी भी ये कोशिश मत करना कि उस पर्सन को आप टच करो, इससे आपको भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। थर्ड वन इज all the electrical appliances with metal body have proper earthing. Fourth is all the switches should be put in the live wire. I repeat, all the switches should be put in the live wire. Fifth one is you do not use the switches or never operate switches with wet hands. मतलब means to say that आप गीले हाथों से कभी भी स्विच टच नहीं करोगे। Next is the household wiring should be good quality wire. Last point, we should avoid work on the live circuit for repairs. If electrician do the repairs, then he or she must wear gloves. So that are the precautions while using the electricity. So this is all about the domestic electric circuit and hazards and precautions, and what is fuse overloading and short circuiting. I hope you well understand my lecture. In the last, I just tell you domestic electric circuit बेटा आपका syllabus से reduce हो गया है this session के लिए, but for other boards PSCB आप ये topic कर सकते हो. So here I just discuss all the topics of this chapter, magnetic effect of electric current. I hope you well understand my lecture. If you like my lecture, then please subscribe, like and share my YouTube channel Prosperous Academy. Thank you and have a nice day. Hello everyone, hope you all are good. We just finished the chapter number 13 of class 10th, that is magnetic effect of electric current. In today's lecture, we just discussed this chapter in brief or doing the recapitulation of this chapter or revision at a glance. So write down recapitulation. Now chapter name is magnetic effect of electric current. So what is magnet? Magnet, how can you show a material is a magnet? That is, magnet में क्या properties होंगी बेटा? It attracts small pieces of iron. It attracts small pieces of iron. Second, आप क्या define कर सकते हो? When it's suspended freely, it always rests in north-south direction. When it's suspended freely, it always rests in
north south direction. Now बच्चे मैग्नेट के टू पोल्स हैं, यू नो दैट, नॉर्थ एंड साउथ. That is called bar magnet. That magnet is called we use it in our science labs. And magnetic field pattern in this case or in the case of bar magnet is look like north south, that is this one. That is magnetic field pattern in case of bar magnet. Magnetic field pattern in case of bar magnet. Note down the check. Okay. Next one is बच्चे magnetic field क्या है आपका? Write down what is magnetic field. What is magnetic field? Magnetic field, the space up to which, write down the answer. The space up to which the force of magnet can be experienced. The space up to which the force of magnet can be experienced is called its magnetic field. Note down the thing. Next है magnetic field lines. Question is, what is magnetic field lines? So magnetic field lines, these are the closed continuous curve. Answer, simple answer है बच्चे, these are the closed continuous curve such that tangent at any point, such that tangent at any point gives the direction of magnetic field, give the direction of magnetic field at that point. Note down the thing. Okay. नेक्स्ट है बच्चे आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. नोट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. Properties of magnetic field lines.
So first property, it starts from north or it moves from north to south. It moves from north to south outside the magnet. Outside the magnet and south to north. South to north inside the magnet. South to north inside the magnet. I just draw the diagram. You clear more with this help of this diagram. That is north, that is south. North to south outside the magnet and south to north inside the magnet. Second is, these are closed continuous curve. You just closed continuous curve. Third is number of magnetic field lines near the poles. Determines the strength of magnetic field. Determines the strength of magnetic field. I just repeat, number of magnetic field lines near the poles or determines the strength of magnetic field. So near the poles, number of magnetic field lines are more. So strength near the pole is more. Write down. Strength near the pole is more. Magnetic field strength strength near the pole is more, and away from the pole it goes down or it gets weaker. Next is bache, the direction of magnetic field line at any point is along the tangent at that point. I just discussed this point as earlier. Next one is, two magnetic field lines never intersect each other. Next is, two magnetic field lines never intersect each other. Why? Here just a question, why two magnetic field lines never intersect each other? Answer is, if two magnetic field lines intersect with each other, then at the point of intersection, there are two directions of magnetic field which is not possible. So two magnetic field lines never intersect each other. You can mention in the properties of magnetic field lines. Note down the check. Okay. Next topic is magnetic field pattern due to current carrying conductors having different shape. Write down magnetic field pattern due to current carrying conductors having different shapes. Having different.
फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट current carrying conductor. In this case, magnetic field pattern is in the form of concentric circle. Magnetic field pattern is in the form of concentric circles. Concentric circles आपके क्या हैं? जिनका सेंटर सेम होता है, having the same center. So magnetic field pattern किस फॉर्म में है? concentric circle की फॉर्म में, और उसका सेंटर कहां पे लाई करेगा? whose center lies on the wire. whose center lies on the wire. नेक्स्ट बच्चे, इसमें आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस रूल से फाइंड आउट करोगे? दैट इज राइट हैंड थंब रूल. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is given by right hand thumb rule. Now आपका right hand thumb rule क्या है बेटा? When you hold a straight current carrying conductor in your right hand, when you hold a straight current carrying conductor in your right hand and thumb gives the direction of current. In this case, thumb किसकी डायरेक्शन देगा? That gives the direction of current. देन आपकी जो कर्व फिंगर्स हैं बच्चे, दिस वन, कर्व फिंगर्स gives the direction of magnetic field, gives the direction of magnetic field. Note down मुझे. Okay. नाउ बच्चे, जो आपका स्ट्रेट वायर है, नाउ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप. मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप. Magnetic field pattern due to a circular loop. Now जो आपका वायर है, that is bent in the form of loop. In this case, magnetic field pattern जो आपका होगा, that is also in the form of circles, but as we reach at the center of the circular loop, the arcs of these big circles would appear as straight lines. In this case भी magnetic field pattern सर्कुलर फॉर्म में होगा, बट जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाएंगे वो आर्क्स क्या होती जाएंगी? सर्कल की बड़ी होती जाएंगी, एंड दे अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन. इफ यू वांट
more description, then go through my all lectures of magnetic effect of electric current. Okay, next one is magnetic field pattern due to a solenoid. Magnetic field pattern due to a solenoid. So solenoid क्या है? First of all we discuss about the solenoid. Solenoid क्या है बच्चे? A coil of many circular turns of insulated copper wire. A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder. Wrapped closely in the shape of cylinder, and it looks like this one. If you draw, that is this one, positive, negative. And magnetic field pattern due to a solenoid is similar to the field pattern that is produced in the bar magnet. It is similar to magnetic field pattern due to bar magnet. Due to bar magnet. That is north, that is south. In this case बच्चे जो आपका field pattern होगा वो in this shape होगा. That is this one. यार जस्ट इसको थोड़ा सा बैटरी के इनवर्ड ले लो. That is this one. Note down मुझे. Okay. ना बच्चे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है इन द केस ऑफ सोलेनॉइड उसकी स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ of magnetic field depends on first है आपका number of turns. First is number of turns. दूसरा second point है आपका strength of the current. Strength of current. Third point is your nature of core material. तीनों केस हैं बच्चे, 3 केस. इनमें नंबर ऑफ टर्न्स जितनी ज्यादा होंगी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी.
करंट की स्ट्रेंथ अगर आप इंक्रीज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आप डिक्रीज करते हो तो ये भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मींस टू से दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, जो आपका कोर मटेरियल जो आप इनसाइड द सोलेनॉइड यूज कर रहे हो, जैसे सॉफ्ट आयरन बार, दैट इज अ प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। नोट डाउन कीजिए। ओके, नाउ बेटा आपका आता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स on current carrying conductor in magnetic field। ये बच्चे बेसिकली आपका किसका प्रिंसिपल बनाता है, दैट इज दिस इज द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। दिस इज द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। मीन्स टू से दैट जो आपका मोटर है इलेक्ट्रिक मोटर, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, दैट इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और जो आपका इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें जो आपका डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is given by Fleming's left hand rule. On the other hand, if we comparison with the direction of induced current, direction of induced current, it forms the basis of generator. It forms the basis of generator, AC or DC, which is not deleted from the syllabus for this session. AC or DC. इसमें डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा रूल अप्लाई करते हो, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। Fleming's right hand rule. So one thing is clear, when you hold straight current carrying conductor in your right hand, then you use the rule right hand thumb rule. When current carrying conductor is in the magnetic field, then you apply Fleming's left hand rule. If you find the direction of induced current, वहां पे mention होगा induced, then you use the rule Fleming's right hand rule. Note down the thing. So in both rules you use 3 fingers, forefinger, middle finger and thumb. In this case also forefinger, middle finger and thumb. How can you learn this? Forefinger F से याद रखना, it gives the direction of magnetic field. It gives the field, strength of magnetic field. It gives the direction of magnetic field in both cases. Direction of magnetic field
यहाँ आप कंप्लीट नोट करते हो, याद रहेगा आपको। फोरफिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड बच्चे आपका क्या है, जो आपका मिडल फिंगर है। मिडिल फिंगर आपका दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और इन दिस केस आपका क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। और आपका जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है उस केस में थंब आपका क्या देगा, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, फोर्स acting on conductor, or in this case thumb gives the direction of motion. Note down the thing. So in this way you can learn easily. Forefinger, both cases, direction of magnetic field. In this case middle finger gives the direction of current. यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, induced current. Third one is thumb, force acting on the conductor. यहाँ पे आपका motion. और आपको कहां पे रूल अप्लाई करना है ये भी आपको क्लियर हो गया यहां से। नोट डाउन बच्चे। ओके, नेक्स्ट बच्चे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, दैट इज अ टेम्परेरी magnet. When you switch on the current it behaves like a magnet, or when you switch off the current it or magnetism disappears. So electromagnet is a temporary magnet. नेक्स्ट बच्चे आपका आता है एसी और डीसी। AC or DC. AC is alternating current that flows in the form of cycle. DC is direct current that flows in only one direction. So you know very well. एडवांटेजेस बच्चे क्या है आपके AC और DC, आप क्या कर सकते हो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस दैट AC कैन फ्लो ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, or it can be controlled by choke coil. AC can be controlled by choke coil. And third one is जो alternating current में आप गैजेट्स यूज करते हो उनकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, अच्छी होती है, मीन्स टू से दैट वो ज्यादा देर तक चल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चे आपका मोटर और जनरेटर है। मोटर आपकी क्या करती है, दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर क्या करता है आपका, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स converts electric energy into mechanical energy, converts electrical energy into mechanical energy. On the other hand जो आपका जनरेटर है वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू
electrical energy. Note down. Okay. नेक्स्ट टॉपिक बच्चे आपका है जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। नोट डाउन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इन दिस केस डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के केस में क्या है बेटा, आपके घरों में जो सप्लाई आती है, सर्किट वी ऑलरेडी डिस्कस। सो यहां पे आप 3 टाइप्स ऑफ वायर्स यूज करते हो, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। लाइव वायर का कलर बच्चे आपका रेड और ब्राउन, नोट कर लो आप, रेड और ब्राउन दोनों में से कोई भी हो सकता है। न्यूट्रल वायर जो आपकी है दैट इज येलो और ब्लैक, येलो और ब्लैक। थर्ड वन इज योर अर्थ वायर, यहां पे आप करेक्ट कर लो, दैट इज ब्लू और ब्लैक। न्यूट्रल वायर इज ब्लू और ब्लैक एंड दिस वन इज येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन। जो हम कलर यूज करते हैं दैट वन इज रेड, ब्लैक और ग्रीन। नोट डाउन बच्चे। और जो घरों में सप्लाई आती है बच्चे आपकी दैट इज एसी ऑफ 220 वोल्ट, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है बेटा आपकी, दैट इज 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट बच्चे जो आप यूज करते हो फ्यूज। सो फ्यूज क्या है, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस which prevents your gadgets or electrical appliances, which prevents your gadgets or electrical appliances when short circuiting or overloading occur. It prevents from short circuiting or overloading. शॉर्ट सर्किटिंग में बच्चे आपकी 2 वायर्स आपस में टच कर जाती हैं। ओवरलोडिंग के केस में क्या करते हो आप, नंबर ऑफ गैजेट्स एट द सेम टाइम जब रन करेंगे तो ओवरलोड हो जाता है, जिससे क्या होता है फायर कैच करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो उस केस में फ्यूज वायर क्या होता है आपका, मेल्ट हो जाता है। सो आपके गैजेट्स क्या हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं। ओके, सो बच्चे आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जैसे व्हाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और आपके यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। वी ऑल डिस्कस ऑल these topics in brief as well as we go through also the explanation. If you want more explanation about these topics, all these topics, then you go through all the lectures of magnetic effect of electric current. So this is all about the magnetic effect of electric current. Today we finally close this chapter and we start with the next chapter,
That is your chapter number 10th, light reflection and refraction. We start with the next chapter, number 10, light reflection and refraction. So go through this chapter. We start with the next lecture, and if you like my lecture, then please subscribe, like and share my YouTube channel Prosperous Academy. Thank you and have a nice day.